this. So the purpose of today's lecture is to have some glimpses on how to think as a programmer, how to avoid some happening mistakes, some comments that I have already made on the code. I'll just walk you through that as well. And we'll try to solve all the confusion that everyone has code mein. Any questions, we'll try to solve it out. So I just want to start from the file from the code that Nikhil had created in this week. So let's just go to this commit on the Bitbucket. And not this one, probably just a minute. मैं से एंड कर देता था. Okay, just a minute. I'm just trying to fetch it up. Okay, just give me a minute, guys. I'll just pull up the code. You cannot minimize. I don't want to minimize. Stage2.py, awesome. And just share my screen. And let's go to the stage2 commit.py. Why? Can download another. And how many do I skip? Okay. Share screen. Or stage2.py, edit with idle. Okay. So this is a copy that Nikhil had created. Let's go step by step. Okay, guys. So what he is doing is okay. First of all, what is the purpose? Okay. So the purpose was to create an Excel file with certain column names, this date, stock name, buy price, this, and add the entries here in the later rows. Okay, for the user to see how much profit he is making, how much loss he is making, and over the period of time, what we are going to do is हम लोग ये चीज चेक करेंगे कि प्रॉफिट ये चीज लाइव हो जाएगा कि प्रॉफिट पर शेयर कितना मिल रहा है और टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है, ये चीज लाइव हो जाएगा. So what he's trying to do is he's trying to import XLSX writer. So what is a XLSX writer basically? What is, okay, XLSX writer. XLSX writer हम लोग तब यूज करते हैं जब हमको कोई पाइथन मॉड्यूल हमको कोई एक्सेल की प्रॉपर्टी सेट करनी है ऑटोमेशन से, या हमको कोई शीट क्रिएट करनी है, वर्कबुक क्रिएट करनी है. ओके, सो whenever we start coding, first of all we will see that हमको अगर टास्क जब पता है तो हम लोग ये डालेंगे कि how to, like for example, how to automate Excel using Python modules. तो हमको it will give us some suggestions and हम लोग चेक करेंगे कि ये suggestions हमारे लिए है, blah 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 blah. A simple guide to automate your Excel reporting with Python. Let's go to this. Right, Nikhil? You must have done this. And then Yes. found कि SLXX writer is a good module to start working with. Right? So ऐसे बहुत सारे modules हैं. SLSX writer है, XLS है. There are lots and lots of modules. So let's read about SLSX writer as we know. Okay. Let's go to this. SLXS writer is a Python module for creating Excel files. Okay. XLSX writer is a Python module that can be used to write numbers, text, formulas, and hyperlinks to Excel 2007 and this. Okay. ये हम कर सकते हैं SLSX writer से. So what Nikhil did was he was using this module SLSX writer और उसने एक function create किया, define user input.
ओके, सो फर्स्ट थिंग आई वांट टू शेयर इज, जब हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं तब जस्ट मेक श्योर कि वो फंक्शन यही चीज करता है जो हम उसको नेम करते हैं। बिकॉज आज आप लोग ये डेवलप कर रहे हो, आपको कुछ कुछ ईयर्स के बाद जब यही कोड में एरर आएगी तब यू शुड नो कि ये फंक्शन हमारा क्या कर रहा था। ओके, सो कंसिडरिंग दैट आई थिंक मैंने ये फंक्शन का नेम चेंज कर दिया था। तो फंक्शन का मैंने नेम कर दिया क्रिएट डेटा फॉर एक्सेल, because it was gathering all the data and putting it to Excel. Okay. Yeah. Following Okay. everyone until here? Yes. Yeah. Yes. Perfect. Yeah. Okay. Second thing, what he did was he created, it was his logic कि हम लोग stocks का एक list create करते हैं. Okay. तो अभी हमको आगे जाने में पता चलेगा कि उसने list क्यों create किया. Okay. So उसने ये method use की है, stocks equals to list, which is not wrong, I must say. Okay. But this is redundant because हम लोग पाइथन में लिस्ट सिंपली ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। सो इसके लिए इफ यू वांट टू सर्च यू कैन लुक इनटू हाउ टू डिक्लेयर अ लिस्ट इन पाइथन। ओके, पाइथन लिस्ट विद एग्जांपल्स, list of programming languages blah blah blah, my list equals to this, my list equals to this. So हम लोग ऐसे list create कर सकते हैं, my list equals to blah blah blah, right? Make sense everyone? Yes. Okay, so उसने क्या किया, he did a list, that's okay. What he is doing is while true. तो हम लोग देखेंगे कि while true हम लोग कब यूज करते हैं, कि हमको जब एक इनफाइनाइट लूप में जाना होता है, राइट? ये you have to read about while true loop, right? हम लोग कब यूज करते हैं अभी। while true loop means forever, means infinite loop. Okay, अगर हम लोग इसमें जाते हैं पाइथन आइडल, सपोज आई विल शो यू अ वर्किंग एग्जांपल। सपोज हम लोग करते हैं while true. Okay, let's do one thing. While true, print, hey Nikhil, you did a good job. Nikhil, not only Nikhil, and Devash, you did a great, or you wrote a great program. Da da da. Enter. See, this is going to be the output. It's continuously going through, right? It's an infinite loop. Forever के लिए हम कर पाएंगे ये चीज. See, it's not stopping. So हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं. Suppose idle, हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं. Like if you want to print n numbers, n equals to 0, while n less than 22 lakhs, print n plus equals to 1. See, ये जो नंबर हमने डिफाइन किया वहां तक ये सिर्फ प्रिंट ही करता रहेगा। while true is an infinite loop. जब तक वो कंडीशन हिट होती रहेगी हमारा लूप रन होता रहेगा। मेक सेंस एवरीवन? क्लियर अंटिल हियर? Yes. Yes. सिमरन? Yeah. ओके, क्रिस्टल क्लियर? Yes, sir. देवर? Yeah. Yes, sir. तो ये why he is using while true loop, it's very interesting. Okay, so stock name उसने let's try to remove a while true loop for better understanding. Okay, stock name buy price one, quantity sell price हम लोग while true loop से रिमूव कर रहे हैं जस्ट टू सी कि अगर वो लूप नहीं होगा तो क्या होगा।
कंट्रोल एस, हम लोग रन करते हैं। वाई ओके, let's Indent error. yeah, because it is a stock split. ओके, अभी while true लूप नहीं है तो क्या होगा, एंटर अ स्टॉक नेम। ओके, तो हम डालेंगे टेस्ला, enter a stock value, suppose $5, enter how many stocks you want to buy, suppose 5, you sell the stock, no, तो ये लूप खत्म हो गया। ठीक है, अभी एक और बार हम लोग रन करके देखते हैं टू मेक इट क्लियर। टेस्ला 5, you want to sell, you sold the stock, yes, enter the sell price 5, ओके, तो खत्म हो गया ये, राइट। अभी उसने ये सोचा होगा कि अगर कोई और वैल्यू हमको ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, तो उसने डाला होगा while true लूप कि हमारा प्रोग्राम एग्जिट ना हो। एक टाइम पे एक ही वैल्यू हमको ऐड नहीं करनी है, हमको एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी है, इसलिए उसने डाला होगा while true लूप। तो अगर while true लूप आ जाता है इसको भी अनकमेंट कर देते हैं, इसको भी अनकमेंट कर देते हैं, इसको भी अनकमेंट कर देते हैं, रन करते हैं। और सपोज यही वैल्यू हो गया टेस्ला 5, you sold the stock, no, do you want to add more, yes, तो वापस स्टॉक नेम आ गया, तो अब डाल दिया हमने एप्पल 6, 4, you sold the stock, yes, 5, 6, do you want to add more, yes, अगर हमने डाल दिया एक्सपेंज, हो गया 4, 7, you sold the stock, no, do you want to add more, right, make sense। हम और अगर हम ये करते हैं, no, we don't want to add more, right, do you want to add more में क्या डाला है इसमें, n या हाँ n, do you want to add And n, तो ब्रेक हो exit जाएगा। हो गया, right, yes, clear everyone यहाँ तक, Yes. yeah, श्रुति, देवर्ष, Yeah. सिमरन, Yep. Yeah. ऑसम, ओके। तो ये क्या कर रहा है, स्टॉक नेम, स्टॉक का नाम डाला, बाय प्राइस डाल दी, क्वांटिटी डाल दी, सेल प्राइस यूजर से आस्क कर ली, ये सब उसने वैलिडेशन, ये सब वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, नन जिसकी जरूरत नहीं थी राइट निखिल yeah, या इफ, तो फिर उसने ये किया कि अगर सेल है, मतलब अगर स्टॉक सेल हो चुका है तो सेल प्राइस यूजर को डालनी पड़ेगी, तो अगर सेल हो चुका है तो ही वो एंटर द शेयर प्राइस, सेल प्राइस करेगा। ठीक है, अगर सेल प्राइस एंटर करेगा तभी प्रॉफिट पता चलेगा। ठीक है, और उसका उसने पूरा एक स्टॉक प्राइस, स्टॉक पेयर का एक टपल बना दिया, which is also needed to be changed, this is not the way we should be doing it, okay निखिल, बट अभी के लिए ठीक है, हम ये रिडंडेंसी बाद में सॉल्व करेंगे। और अगर एस अंडरस्कोर सेल यस नहीं होता है, ठीक है, तो स्टॉक पेयर इसने ये कर दिया, उस और एक टपल बना दिया जिसमें प्रॉफिट वॉफिट कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। और फिर वो स्टॉक्स के लिस्ट में उसको अपेंड कर रहा है, जो जो ये उसका टपल है उसको अपेंड कर रहा है, और ये अपेंड इसीलिए कर रहा है ताकि वो कॉलम और रोज में डाल सके, राइट निखिल। और बाद yes, अभी भी वो उसको पूछ रहा है कि डू यू वांट टू ऐड एनी मोर स्टॉक्स, अगर नो तो फिर वो लूप ब्रेक कर रहा है, और अगर यस तो वो चेंज, वो और डाल सकता है, राइट। अभी आई वांट टू ऐड, अभी ये फंक्शन सबका क्लियर हो गया व्हाट इट डज, और वो स्टॉक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, वो यूज करेगा बाद में। ठीक है, क्लियर एवरीवन यहाँ तक, एनी क्वेश्चंस और ऑन। यस, टपल और अपेंड वाला बताना। ओके, basically tuple is something that works as a list, okay, for example मैं ये लिस्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ a equals to 1 2 3 4, ठीक है, तो अगर मैं a of 0 करता हूँ तो मुझे 1 मिलेगा,
a of 3 करता हूँ तो मुझे 4 मिलेगा, राइट? अभी ऐसे में एक Okay. टपल डिक्लेयर करता हूँ 1 2 1 2 3 4। अभी सपोज मैं a of 0 करता हूँ तो लेट्स सी क्या मिलता है 1, a of 1 डिक्लेयर करता हूँ तो 2, राइट? सो टपल इज समथिंग लाइक अ लिस्ट. But it's immutable, right? Yeah, Yes. right. It's what? It's Immutable. That means it can't be changed, right? yeah. I'm not sure if it can be changed or not. We No, can't no, it add can't change. or something. We can't like modify the value of tuple. modify. Yeah, in tuple, but in list we can modify. Okay. Yes. Okay, for example, you have provided this list 1 2 3 4, so you cannot modify it. List It को would modify remain कर the सकते same. हैं. List को modify कर सकते हैं, tuple को नहीं कर सकते. नहीं, अगर जैसे ये टपल है हाँ. इसने है ना, तो ये टपल 1 2 3 4 इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. शायद उसका append और वो सब नहीं कर सकते, उसमें से कोई वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते. आई थिंक सो टपल का यही रूल है. 1 2 3 Yes. Yes. 4 5 6. Okay. तो एक टपल को किसी और तरीके से भी डिक्लेयर करते हैं, ये तो ऐसे हम लिस्ट को भी लिखते हैं सेम. नहीं. नहीं, ना ब्रैकेट tuple का के brackets डिफरेंस है अलग ना. है. अच्छा, तो Brackets- ब्रैकेट स्क्वायर नहीं है? नहीं, Parent- टपल्स के राउंड है और अच्छा अच्छा अच्छा, और नीचे ये लिस्ट है जो इसने अभी लिखा है शैल ने. अभी ओके, ये डिफरेंस है. ओके. लेट्स ट्राई टू डू इट, राइट? अगर a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 है, राइट? तो हमारे पास a ऑफ 4 की वैल्यू क्या है? 5 है, राइट? अभी 5. लेट्स ट्राई टू चेंज द वैल्यू ऑफ a ऑफ 4 टू b फॉर एग्जांपल, और हम a को प्रिंट करते हैं तो सी ये b हो गया, हाँ जी. इंडेक्स b हो गई, राइट? यस. अगर But हम लोग index- टपल ऐसे डिक्लेयर करते हैं, I don't want to rework. Lazy programmer. 1 2 3 4 5 6. तो अगर a ऑफ हम लोग चेंज a ऑफ 4 करते हैं सपोज इक्वल्स टू x करते हैं, it we will can, give error. right? We cannot change it. ओके. और दूसरा एक चीज आई थिंक व्हाट आई नोटेड इज हम लोग लिस्ट में वैल्यूज अपेंड कर सकते हैं. Yeah. ये हमारा a लिस्ट है, a इक्वल्स टू, मैं चेंज करता A हूँ, dot append. ये हो गया a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, राइट? अगर हम a डॉट अपेंड करते हैं और वैल्यू हम लोग s करते हैं, सपोज मेरा नाम ऐड करते हैं जो शायद तो पीछे ऐड हो. पीछे ऐड हो जाएगा. जब हम टपल में ये चीज नहीं कर सकते, Yeah. जब ये सपोज ये टपल हो गया, कर सकते हैं या नहीं कर, शायद तो नहीं कर सकते. नहीं हो सकता. चलो. ये डॉट अपेंड नहीं कर सकता, राइट? Yeah. ठीक है. So future में we will be trying to change this to a list, not the tuple, because list has far more functionalities to offer, right? So ये function clear everyone? Yes. Yeah. Devarsh, अ, Simran, ये अपेंड का क्या है? अपेंड स्टॉक्स डॉट अपेंड स्टॉक. ये इसने इसलिए किया है, this line is used because आज ये एक वो क्या करने वाला है कि ये जो वैल्यूज है ना, इसको उठा के he will be putting it here. In this list, stocks नाम के 2 list 3 है. 4 5 6 में डालेगा. ठीक बट है. अगर मल्टीपल है, राइट? अगर मल्टीपल वैल्यूज हो गई है तो उसको एक एक, तो ये a ऑफ सपोज स्टॉक पेयर ऑफ 0 पे ये आ जाएगी, स्टॉक पेयर ऑफ 1 पे हमने जैसे एप्पल की वैल्यू डाली थी वो आ जाएगी, स्टॉक पेयर ऑफ 2 पे हमने एक्सपेंस की वैल्यू डाली थी वो आ जाएगी. तो ये फंक्शन रिक्रिएट होता रहेगा. क्लियर? और उसको हम इस लिस्ट में, स्टॉक्स नाम की लिस्ट में अपेंड करते हैं, जो यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है. नॉट क्लियर. Yes. नॉट क्लियर, राइट सिमरन? नहीं, मेरे को पता लग गया. लग गया? ओके. हाँ. तो जो भी ये टपल है वो स्टॉक्स नाम की जो लिस्ट है उसमें ऐड होता रहेगा. जैसे देखो हमने टेस्ला डाला था, राइट? तो a ऑफ 0 पे जी. हमारा ये, अरे स्टॉक पेयर ऑफ 0 पे टेस्ला की स्टॉक नेम
ए उसकी उसकी बाय प्राइस क्वांटिटी ब्ला 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 सब आ जाएगा, राइट? मल्टी ठीक है। डायमेंशनल एरे टाइप हो गए। हाँ, फिर सेकंड में क्या होगा, हम लोग स्टॉक पेयर ऑफ, हमने जो एप्पल डाला था वो स्टॉक पेयर ऑफ 1 में आ जाएगा। ठीक है। एक्चुअली सर प्रिंट करने का ज्यादा आइडिया आ जाएगा, हाँ, एक बार कर देते हैं, चलो लेट्स डू इट। क्योंकि वो प्रॉपर वे में दिखाएगी लिस्ट पर। यस, एब्सोल्युटली। Nikhil, one more question, man. ओके। Why did you put stocks dot sort inside? Oh, it's outside. Sorry, my bad. एक्चुअली ये पूरा पूरा कोड है तो देवर्ष का है, और मेरे से मुझे आपने जो भी टास्क दिया उसमें से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था, तो मैंने इसको बस नीचे वो थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर दी, और ऊपर का लॉजिक लिख दिया, नीचे का थोड़ा लॉजिक लिख दिया, दैट्स इट, डन। देवर्ष बका बोलतो केम નથી? હા દેवर्ष સર એકચ્યુઅલી એક્સિડન્ટ થયો છે ને એટલે અત્યારે मतलब કેટલા क्या દિવસથી કોલેજ બી નહોતો જતો. શું થયું બકા? All well? હા સર હવે બરોબર છે. એટલે કીધું ही नहीं, मैं फोन કર્યો था। અરે નાનકડો જ એક્સિડન્ટ હતો એ તો વાંધો નહીં. मतलब કહેવાય તો કરું ને। હા હવે તમ તારે હમણાં એક્ઝામ પતે ને પછી બધા મળી. આરપી મળ્યો। યસ સર, હા કોડ બધો સોર્ટેડ છે. ઈ પ્રિન્ટ એકચ્યુઅલી સર એટલે કરેલું કારણ કે એને ટેસ્ટ કરવાનો હતો ને, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની પહેલા એટલે. Right. તો દેવાજ કહેતો ખરો કે આ કોડ લાઈક તે ડેવલપ કરે છે આખો, તેના નિખિલે ભેગા થઈને? હા સર, એકચ્યુઅલી મેં નિખિલ ને ને કીધું હતું કે આ રીતે ડેવલપ થોડું કર લેજે, એણે ઓલમોસ્ટ કીધું મેં હતું। કર્યું છે એ તો. Yeah, so see, ये તારે એ આપણે બંનેવે કર્યું. હા મેં એ જ કીધું કે એણે જ મને સજેશન આપ્યું કામ કરવાનું, જે મોટા ભાગે થઈ જશે। या सो से टेस्ला का टपल फर्स्ट 0th इंडेक्स पे आ गया, एप्पल का टपल फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया, एक्सपेंस का टपल सेकंड इंडेक्स पे आ गया, और टीडी का टपल 4th इंडेक्स पे आ गया, राइट? यस। और इसमें हमने टेस्ट किया था कि शेयर सेल हो गया है तो ये वैल्यूज आ गए, और इसमें नो किया था तो प्रॉफिट ऑफिट इसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी, राइट? क्लियर एवरीवन? Yeah. यस। यस सर. Okay. This function should be clear now, right? So इसमें मैंने थोड़े modifications किए हैं which I want to do as a programmer. So first modification जो list declare किया था, right? वो मैंने simple redundancy remove करके I just created a empty list. Okay? यस। Okay, let's do it Yeah. side. Let's do it side by side. Okay. तो स्टॉक नेम, स्टॉक्स की लिस्ट क्रिएट कर दी, स्टॉक नेम इक्वल्स टू इनपुट द नेम ऑफ द स्टॉक, ये सब तो सेम है। ओके, मैंने व्हाइल लूप रिमूव कर दिया है। इट्स ओके, होता है। ओके, बट वी विल सी कि क्यों किया है। ओके, लेट्स चेक इट आउट। स्टॉक नेम इक्वल्स टू एंटर द नेम ऑफ द स्टॉक, यूएसडी कैनेडियन फ्लैग। फ्लैग इसलिए यूज किया है कि यूएसडी है वैल्यू या कैनेडियन वैल्यू है। ओके, so is the stock listed in USD? Answer yes. तो अगर USD में है तो ये सिर्फ मैसेज प्रिंट कर देगा कि इट इज इन USD, और इसका लॉजिक हम लेटर प्रिंट में ऐड करेंगे। और अगर USD फ्लैग में नहीं है और कनेडियन में है वैल्यूज, तो बाय प्राइस मांगेगा, क्वांटिटी मांगेगा, टोटल बाय प्राइस यही सेम चीज करेगा, स्टॉक सेल मांगेगा। फिर यही लॉजिक यूज किया है, अगर सेल हो गया है तो सेल प्राइस मांगेगा, प्रॉफिट मांगेगा, ये करेगा वो करेगा, और अगर नहीं हुआ है तो वही टपल क्रिएट करके अपेंड करके ये कर देगा। बट मेरे कोड में डिफरेंस ये है, आई हैव थॉट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज।
Now make sure when I say the word different possibilities, okay? For example, मैंने ये एक if condition सोची कि if USD Canadian flag is equals to yes, okay? तो ये लॉजिक हमारा आ जाएगा. Else if USD Canadian flag equals to no, अगर USD वैल्यू नहीं है तो ये पूरा लॉजिक आ जाएगा, ये पूरा लॉजिक आ जाएगा. और अगर ये दोनों में से एक भी सिचुएशन फुलफिल नहीं होती है, राइट, तो हम लोग एक एक्सेप्शन रेज करेंगे कि इनकरेक्ट वैल्यू एंटर्ड. द एंटर्ड वैल्यू कैन आइदर बी yes or no, that's it. Entered value is this. Make sense? ये कोड में क्या हो रहा है कि अगर हमने yes किया तो ठीक है, no किया तो ठीक है, नहीं yes किया तो ठीक है, no हमने कोई XYZ स्ट्रिंग एंटर की तो ये कर देगा, yes किया तो ये कर देगा, अगर no हमने कोई भी XYZ yes के अलावा कोई स्ट्रिंग की तो ये कर देगा, which is not true. Right? Make sense what I'm saying? Yes. Yes. Right? तो मैंने उसका, हम लोग कभी भी कोड लिखेंगे तो हम लोग उसकी else possibility सोचेंगे कि इसके सिवा ये हो सकता है. Right? See, जैसे इसके अंदर मैंने किया, अगर कैनेडियन में वैल्यूज है, राइट, तो बाय प्राइस ये हो गई, क्वांटिटी ये हो गई, ये राइट, ये सब हो गया. इफ स्टॉक सेल हो गया है, अगर यूजर यस एंटर करता है तो ये करेगा, अगर नो एंटर करता है तो ये करेगा, राइट. और अगर यस और नो दोनों में से एक भी एंटर नहीं करता है तो आई हैव नॉट थॉट ऑफ दैट, तो यहाँ पे एल्स होना चाहिए, एक्सेप्शन. Incorrect value entered. The entered value can for the entered value can either yes or yes or no for the cell value. Okay. Yes, एक हमको we found one more thing, right? Cool. तो ये कोड सेट हो गया हमारा. Any questions until here? Anyone? No. Devarsh? No, sir. Okay. Simran? No. Shruti? No. Awesome. Perfect. Abhi, anyone wants to say anything? No. Okay. Okay. अब यहाँ पे एक और मिस्टेक ये थी ये कोड में कि आप देखो कि inconsistent spacing. You see, stocks equals to this. This does not look good, right? It has to be consistent spacing. यहाँ पे ये consistent spacing है, ये consistent spacing है, consistent, right? फिर देखो यहाँ पे operators के बीच में it's not consistent. It has to be consistent. अरे consistent, right? और ये देखो यहाँ पे आपने ये क्रिएट किया है सेल प्राइस बाय प्राइस, ये कॉमा के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस है, दिस, ये कॉमा के बीच में वापस एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है. गाइस जस्ट अ मिनट. या और यहाँ पे देखो ये इनकंसिस्टेंसी, ये इनकंसिस्टेंसी, फिर यहाँ पे एक स्पेस कम है, सो स्पेस 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 स्पेस. You see, this is consistency, guys. We have to maintain it. Okay, everyone? Okay. Yeah.
मैंने भी नहीं की है, which is not the good thing on my part. Row plus equals to 1. Okay, so I think here we found the problem, Devarsh or Nikhil. Uh, uh, मैंने while true loop नहीं यूज किया है, इसलिए वो वैल्यूज शायद एक के बाद एक जा नहीं रही थी एक्सेल में, राइट गाइस? Yes. Yeah, so Simran, one Yes, sir. question for you. Yeah. मुझे while true values ऐड करनी है इस कोड में, तो यहाँ पे मैं कहाँ पे while true loop लगाऊंगा तो that would be helpful in this code, in my code. Guys, just hold on a minute. I'll be right back. Just 2 minutes. So back to the question, Simran. Why do you think that we can add the while true loop to so that the things would work out from our end in this code? वही stock name से पहले, Uh, after you declared stocks list. after matlab here, Yeah. right? Can I ask why after the stocks? This it is right. Because हाँ, क्योंकि ये enter the name of the stock. This is what you want to be. This is what you want to like get retrieve the values again and again, right? Exactly. So what if I would do it before the stock list? Before the stock Before. list. Yeah. Then फिर वो stock list ही बनती रहेंगी. स्टॉक लिस्ट Right? हर बार न्यू डिक्लेयर होता रहेगा इसलिए. That's right. और ये चीज should go more stocks. Okay, awesome. So हम लोग ने while true के अंदर ये डाल दिया है. I think Nikhil left. Okay. Let's just quickly try to run it. Right? Or let's not run it for now. Let's see all the functions. अब मैंने ये function separate कर दिया. Define add more stocks. Okay. The reason behind it is कि ये function हमारा user values ही ले रहा था. It has everything to do with the user values, right? तो मैंने ये function for ease different कर दिया. Right? तो ये क्या करेगा? While more stocks equals to yes, तो create data for Excel. ये करेगा. अगर चाहिए ज्यादा तो create Excel. अगर no तो फिर ये break कर देगा और इसके अलावा ये raise exception करेगा. Clear? ये just ये function मैंने ज्यादा create किया है. Got it, guys? अगर while more stocks is equal to yes, तो ये create कर दे, ये call कर देगा ये function जो create किया, create data for Excel. Yeah, ये function. Else, हाँ, अगर no, या ये वाला function जो ऊपर है, और नहीं हुआ तो it will break. Yes. और else means अगर इसकी जगह कोई और yes no की जगह कोई और value provide कर दे, then it will provide this exception. Incorrect value entered. Okay. तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि I want to change it with if, else if or else. I want to do it something like this. If, elif or else. Okay. But the thing is कि हम लोग ये break जो चीज है वो loop में use कर सकते हैं, condition के साथ नहीं use कर सकते. तो anyone has any suggestions for this? I have not thought on it कि हम कैसे करेंगे. Pass. Yes. Use pass keyword.
we'll use the pass keyword. पर फिर लूप ब्रेक कैसे होगा? कंडीशन में से एग्जिट कैसे करेंगे? I had thought of the pass keyword. Okay. So ये चीज एक्चुअली रन नहीं होगी अगर पास कीवर्ड क्या करता है? पास कीवर्ड सिंपली पास कर देता है. मतलब वो नेक्स्ट कंडीशन पे चल जाता है. या ये ओके. नेक्स्ट कंडीशन पे नहीं, अगर यहाँ पे हम पास करेंगे ना, तो अगर नो आएगा तो वो पास कर देगा सिचुएशन सिर्फ. दैट्स इट. लेट्स सी वो अच्छा अच्छा कंटिन्यू की तरह. अच्छा. कंटिन्यू. ओके ओके ओके, समझ गई, मैं समझ गई. नहीं, लेट्स ट्राई टू रन. Okay, enter the stock name. Testa. Is the stock in USD? Suppose no. Enter the stock buy price $5. How many stocks you have in total? 4. Did you sell the stock? Yes. Agar enter the sell price in CAD, $6. Do you want to add more stocks? Enter the name of the stock. See, हमको ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि नो सिर्फ पास करता है. हाँ हाँ हाँ. तो अगर हम यहाँ पे while लगा के देखें, while But if the થઈ જશે ને, તો recursion થઈ ગયું ને એટલે. exactly, that's the issue. But we cannot break it in the condition, you know. સમજી ના શકે exactly issue શું થાય છે. Okay. For example, આપણે આ वस्तु हम लोग ये चीज यूज करते हैं, राइट? else if more stocks अगर नो करना है हमको, तो हम लोग ब्रेक कीवर्ड कंडीशन में नहीं यूज कर सकते. हम लोग ब्रेक कीवर्ड सिर्फ लूप्स. लूप्स में यूज कर सकते हैं. Okay. Right? That's my concern. So you want to use if else condition here? If else condition is better because to avoid recursion. यहाँ पे मैं while else कर रहा हूँ, which is not the right thing to do. It's as a programmer. Suppose Tesla is the USD, no. Enter the buy price 5. Enter how many stocks you want to enter 7. Did you sell the stock? Yes. Enter the sell price 5. Do you want to add more stocks? No. तो ये भी गलत है. Right? It should break. Or I have a solution maybe. While true के अंदर ही हम लोग इसको अगर ऐड कर दे, let's just copy this thing, not create a recursion function. Let's just cut it out. Let's go to home. अगर हम लोग इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, go to home. और अगर हम लोग यहाँ पे if condition डालते हैं, तो क्या हम डाल सकते हैं? If ये शायद this will work out. If break or if not. Is this a good way to program? Let's see. Oops, sorry. Module stock in USD, no. Stocks by price 5, 6. You sell the stock? Yes. Enter chapter 6. Do you want to add more stocks? No. Should exit now. Yeah, this works. But अगर हमको यही चीज एक अलग फंक्शन में करनी है, तो that does not. So problem is clear, right, guys? What's the issue? Yes. This thing. तो अभी हमने if else में ब्रेक कैसे यूज किया? ये ब्रेक इसीलिए वर्क हुआ क्योंकि ये while लूप के अंदर है.
अच्छा या oh. फिर I have one more way. Sorry guys, it's just crazy brain trying to fix it. और एक रास्ता है अगर करना है तो let's just try this. I was thinking the other day ये चीज but इतने थॉट्स नहीं आए थे मेरे छोटे से ब्रेन में. रिटर्न स्टॉक्स इसको मैं कर देता हूँ if और else और यहाँ पे कर देता हूँ this should potentially work. There is exception run module. Oh, okay. Indentation error. Tesla, no. 5, 6. You sell the stock. Yes. Sell price of the share 6. Do you want to add more? No. Perfect. This works. Right, guys? पता Yeah. चला क्या हुआ यहाँ पे? Yes. देवर्ष, Yes, sir. सिमरन, श्रुति. हेलो. हाँ मेरे को थोड़ा समझ आ गया. सो जस्ट हमने while लूप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया बिकॉज हमको ब्रेक करना है यहाँ की जगह, क्योंकि ये फंक्शन तो एनीवे while लूप के अंदर ही है. मेक सेंस श्रुति? श्रुति asleep? श्रुति गुड मॉर्निंग. मेरे को लगता है जैसे ये इतना दिमाग चलेगा, मेरा भी थोड़ा स्लो चल रहा है. 100% it will go with XP. राइट. और ये फंक्शन तो हम लोग ने उस दिन देखा था. एक ये फंक्शन में हम लोग ने सिर्फ क्या किया है, वन चेंज. ओके निखिल और देवर्ष, I'll just end it Okay. because I know कल तुम्हारी एग्जाम्स है. राइट. No, sir, it's okay. थोड़ा फ्रेश हो रहा है माइंड सुबह से. But okay. या सो आपने एग्जाम कौन सा है? Operation research. ओह, ये तो हमारी एमबीए में था. पता ही नहीं वो क्या होता है. आप सब्जेक्ट का नाम अलग होगा. कंटेंट्स क्या है उसके? हेलो. Hello. What are the contents for it? मतलब OR में ओआर में सिंपल वर्ड में कहूँ तो स्टेट टाइप, स्टेटिस्टिक्स. Actually, mathematical subject. हाँ स्टैट्स होता है. उसमें वो प्रोग्रामिंग આવે. लॉग वगैरह भी यूज करते हैं. ये प्रोग्रामिंग का तो नहीं खबर पड़તું આ સ્ટુડિયો નું. हाँ આર સ્ટુડિયો. ઓકે, Yes, sir. Studio. યુઝ કર્યું છે. એલ્જામાં તો કરાવે છે. નહીં મજા આવે. મને તો પાયથન સિવાય કે ખબર નહીં, આઈ ડોન્ટ નો, મને કે લેંગ્વેજ બી નથી ગમતી. PHP ને બધું બી મને નતું ગમતું. હા એવું છે. આર સ્ટુડિયો બી નતું ગમતું, ડોટ નેટ ને એ બધું. જાવામાં પહેલા અચ્છા લગા, फिर वो પેકેજીસ એમાં ફ્રેમવર્ક્સ જે યુઝ કરવાના આવે છે ને એ પછી મજા નથી આવતી. એમાં જાવા સારું છે, ઉપ્સ ને બધું વાંધો ના આવે, બટ જે ફ્રેમવર્ક્સ યુઝ કરવાના આવે ને એડવાન્સ જાવામાં, ધેટ ઇઝ નેક્સ્ટ સેમ માં એક છે, 5th સેમ માં
एडवांस जावा યા એમાં फ्रेमवर्किंग एंड ફ્રેમવર્ક્સ આવે एंड्रॉइड એ કંટાળો આવે પછી नहीं એના नहीं કરતા पास तो थवू पड़શે પાયથનમાં સારું છે જેંગો ફ્રેમવર્ક ફ્લાસ્ક डिजांगो યા ડીજેંગો અને ફ્લાસ્ક ને एक्चुअली इन 6 સેમ હા डिजांगो फ्रेमवर्क આવશે અમારે હા એનો યુઝ કરીને પ્રોજેક્ટ છે ઓકે હું ઇન્ડિયામાં હતી ત્યારે હું જે જોબ કરતી હતી એમાં અમે એ જ યુઝ કરતા હતા જેંગો इजी પડે યા ઇટ ઇઝ ગુડ पाइथन जोड़े तो भाई मजा ही जाए आती है ये लोग गुजराती में जो बात करते हैं थोड़ी थोड़ी। मुझे हाँ नहीं, थोड़ा बहुत रेयर बट ज्यादा नहीं। અચ્છા कोई नहीं साथ रह के आ जाएगी थोड़ी जैसे डिफरेंट है, अब जैसे पंजाबी है उसमें थोड़ा हिंदी के ही वर्ड से मिलता जुलता है तो हाँ। समझ आ जाती है। Did you sell the stock? Did you sell the stock? Yes. Enter the price 7. Do you want to add more stocks? No. देखा no पे भी it's going into मतलब second no पे it's creating a hurdle. Interesting. Second no पे it's not breaking. So हम while true यहाँ पे use नहीं कर सकते. Most probably. क्यों? क्योंकि second we have to debug that कि हम लोग क्यों नहीं use कर सकते. पर ये सेकंड पे क्यों ऐसा कर रहा है? वही डिबग कर रहा है Any idea anyone? આપણે અહીંયા if માં જ મોસ્ટ ઓફ માં મતલબ વાળી સ્ટ્રિંગ લઈ લઈએ તો So if માં એડ મોર સ્ટોક જો ફંક્શન કોલ કરીએ ત્યાં જ આમ યુઝર જોડે ઇનપુટ લઈ લઈએ તો બધું but it's નો a નો એનો કોઈ સેન્સ નહીં પડે it's a recursive call, right? That's the reason Yeah. we are doing this thing. Okay, so let's see. अगर stock sell हो गया, yes. Okay. अगर શૈલ તે નો લખ્યું તો એન લખ્યું તો no लख्યું तो no. Stock sell हो गया suppose no तो ये create कर देगा stocks को append कर ના देगा. ના Raise exception. Okay. Add more stocks. If more stocks equals to yes, to do this. If more, else if more stocks equals to no, to break. Else incorrect values entered. Okay. पर no डालेंगे एक बार function run हो जाएगा. Create data for Excel. Okay, guys, I know what the problem is. Okay. I know what the issue is. Anyone wants to figure out what's the problem? जब हम एड मोर स्टॉक फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो जो रिटर्न जो हमारी स्टॉक्स लिस्ट है वो रिटर्न का कैसे होगी Exactly. क्योंकि हम एड मोर स्टॉक में तो कुछ रिटर्न ही नहीं करवा रहे तो वो तो सिर्फ घूम घूम के रुक जाएगा ना कुछ रिटर्न तो होगा ही नहीं Not exactly that. रिटर्न तो यहाँ पे किया ही है ना रिटर्न स्टॉक डेफ क्रिएट डेटा फॉर एक्सेल में बट उसके पहले हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो तो उस फंक्शन में चला जाएगा ना पर फंक्शन के अंदर रिटर्न ऐसे नहीं होता है.
रिटर्न ब्रेक नहीं करेगा. Okay. There is just one small problem, guys. Tell me what it is. Okay, let's do. ઇન્ટેન્ડેશન પ્રોબ્લેમ છે. No. એ તો કોઈ કમ્પલ ટાઈમ જ આવી જાતના. નો. This is the problem. હા. કેમ પછી એક સેકન્ડ. Think. Any idea anyone कि क्यों ये change किया? No. Think. I'll give you how much? 153. I'll give you 2 minutes until 155 or 150. Okay. Take your time until 156. ये तो एरर देगा क्योंकि हम कॉल कर रहे हैं तो उसको स्टॉक्स कहाँ से मिलेगा फिर. શૈલા એરર દેશે કારણ કે એડ મોર સ્ટોક્સ માં તું સ્ટોક્સ ને ડિફાઇન કરે છે લિસ્ટ અને તું રિટર્ન પેલા માં કરાવે. કાં તો પછી આપણે ત્યાંથી જ એડ મોર સ્ટોક ને બીજી લિસ્ટ જ પાસ કરી દઈએ તો અને પછી લિસ્ટ ને રિટર્ન કરી નાખીએ તો. I doubt कि अब ये एरर देगा. I mean मुझे लगता है वहां तक नहीं देगा because यहाँ पे हमने स्टॉक्स डिफाइन किया है, राइट? પણ તું રિટર્ન બીજા ફંક્શન માં કરાવે છે. I think એ પણ આપણું સૌથી પહેલા તો ક્રિએટ ફોર એક્સેલ થશે ને. એને કોઈ डेटा फॉर एक्सेल में આ રહ્યું ને. નીચે છે મેઇન. ક્યાં છે? ના ના મેઇન ફંક્શન માં હશે. ये डेटा फॉर एक्सेल બોટમ માં. राइट. सो स्टॉक्स स्टॉक्स डालेंगे हम. स्टॉक्स डिफाइन कर देते हैं. स्टॉक्स यहाँ पे हो जाएगा. Stocks. Add more stocks. How about this? Stock by price 6, 5. Did you sell the stock? Yes. Enter the sell price 8. Do you want to add more stocks? Yes. Is the stock listing? No. Enter the stocks by price 6, 7. Do you sell the stock? No. Do you want to add more stocks? No. Again that recursion problem. We have to fix it up, guys. But my logic was कि जब हम लोग stocks यहाँ पे define करेंगे, which is correct, right? अगर stocks हम लोग यहाँ पे define करते हैं, तो क्या होगा कि जब हम लोग yes करेंगे, right? तब every single time new list create होगा. ये same list हम लोग post नहीं कर पाएंगे. बट हम तो पास करेंगे तो नहीं क्यों करेगा? क्योंकि लिस्ट तो रेफरेंस से ही जाएगी ना पूरी पूरी. Nah, what I'm trying to say is, I'll show what I'm trying. हम लोग suppose
स्टॉक्स यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, राइट? ओके तो ये केस में क्या होगा कि जब while ट्रू होगा तो इफ मोर स्टॉक्स इक्वल्स टू यस होगा, राइट? अगर हमको मोर स्टॉक ऐड करने हैं तो जो लिस्ट होगी वो यहाँ पे स्क्रैच से स्टार्ट होगी, ये वो जीरो पे ओके શૈલ આ એડ મોર સ્ટોક્સ નામનું જે તે અહીંયા કર્યું છે ક્રિએટ ડેટા ફોર એક્સેલ માં કોલ કર્યું છે તે જે એડ મોર સ્ટોક્સ નામનું ફંક્શન લાઈક ફર્સ્ટ ફંક્શન માં તે એડ મોર સ્ટોક્સ નામનું ફંક્શન કોલ કર્યું છે રાઈટ એ આઈ થિંક તો બહાર ના આવે એલિફ ની બીકોઝ એ બીજો જે સ્ટોક હશે એ કેડ હોય યુએસડી બી હોઈ શકે વી ડોન્ટ નો રાઈટ તું એલિફ ની અંદર જ એને એલિફ ની અંદર ક્યાં છે? ભારત છે ઓકે ભારત છે. ઓકે ये तो क्लियर हो गई स्टॉक्स डिफाइन This is a recursion problem. So more stocks equals to no. More stocks, more stocks. अगर हम while true नहीं यूज करते हैं so everyone agrees कि ये concept तो गलत है, like stocks तो it's going to fall under somewhere else, right? यस Simran, agree? या मुझे समझ नहीं आया. Okay. कोई नहीं आ जाएगा धीरे धीरे नहीं I'll try to explain what is happening. ओके So you agree कि हमको ये recursion call करना पड़ेगा under any situation? Yes. And the reason is कि हमको ये function okay ये function हमको पूरा वापस लेना है. If more stocks enter then हाँ ये function हमको पूरा वापस लेना है. तो हम जब recursion call करेंगे तब ये भी call होगा, right? So what will happen is stocks की value हमेशा none हो जाएगी, ओवरराइट होगा वो zero हो जाएगी, मतलब always first index पे ही होगा. Okay. इसलिए मैं stocks की value यहाँ पे डाल देता हूँ for example. हम लोग stocks कर देते हैं. I'm not happy with passing the entire list here, but I am helpless. શૈલ અહીંયા કંઈક પ્રિન્ટ કરાય છે ને એલિફ મોર સ્ટોક્સ ઇક્વલ્સ ટુ નો પછી નીચે જાય છે કે બ્રેકમાં કે જતું જ નથી Elif more stocks. Break तो दो ना, break ना जतो, that's the issue. યા બટ કંઈક પ્રિન્ટ કરાય જો તો લાઈક બ્રેક નથી થતું પ્રિન્ટમાં જાય છે કે એ બી નથી થતું That's a good debug. Enter the stock. Did you select the stock? Yes. Sell buy. No. No करो ना. યા One position. क्या missing था? Admin.
Stocks buy price 6. Did you sell the stock? Yes. You want to add new stock. It breaks for the first time, but not the second time. प्रिंट हुआ कुछ? हाँ, ABCD हुआ ना. Okay. For second one will say. Did you sell the stock? Yes, suppose $4. Do you want to add more stocks? Yes. Enter the apple. Is the stock listed in USD? No. Enter the stocks buy price 6. How many stocks? 7. Did you sell the stock? Yes. Enter the sell price 5. You want to add more stocks? No. ABCD. And second time is the issue. So The second time print third ABCD. ABCD is the third. But break तो ना break ना third. It's not breaking the. That means break ना third. તો print થાય છે તો break થવું જ જોઈએ, right? Like it's going into this loop, this else if condition, but it's not breaking it up. I'm just stopping the recording. I want to debug something. Oh. Okay, so what we were able to solve the problem. What was happening is यहाँ पे while true हमने यूज किया था, मतलब कोई भी कंडीशन हिट होती, राइट, तो वो वापस वो कंडीशन चेक करके वापस while true लूप में ही घुसता, तो वो वापस इनफाइनाइट लूप हो जाता. सो व्हाट वी डिड, हम लोग ने यहाँ वैल्यू रिटर्न नन कर दी अगर वैल्यू नो है तो, और while true यहाँ पे कर दिया. उससे क्या होगा कि जब मोर स्टॉक्स इक्वल्स टू यस होगा, तब एवरी सिंगल टाइम दिस लूप विल कीप रनिंग, एवरी सिंगल टाइम दिस विल रन, और अगर नो होगा तो रिटर्न नन कर देगा. मेक सेंस और कंफ्यूज्ड? Confused. Okay. Okay guys, so Simran, make sense or confused? Yeah, making Biju. sense actually. See? हाँ, Okay, પછી જમી લઈશ વાંધો નથી. so you confused or make sense? ના, confused. Devarsh? Yes sir, I solve it. Yes. You understood what the problem is? Yes sir. So first question I want to ask you guys, okay, कि हम लोग ने ये क्यों यूज किया? Because राइट, तो हम लोग ने ये यूज किया, राइट, तो ये फंक्शन जब भी इफ मोर स्टॉक्स इक्वल्स टू यस होगा, तब ये फंक्शन रन होगा ही होगा. अभी हम लोग जब यहाँ पे while ट्रू करते थे, तब क्या होता था कि यहाँ पे आके while ट्रू होता था, यहाँ पे आके while ट्रू होता था, ना कि यहाँ पे होता था. तो यहाँ पे आके while ट्रू होता था, मतलब ये चीज वापस रन होती थी, यही चीज वापस रन होती थी. तो अगर यस होता था तो ये हो जाता था, और नो होता था तो ब्रेक नहीं हो रहा, क्योंकि ये चीज रन हो रही थी ऊपर वापस. पता चला? और स्टिल Got it. निखिल कंफ्यूज्ड? હા, because while માં break કરનાખી તો પછી કેમ જાય છે પાછું ઉપર? Because અગર for